Good evening, YouTube. Good evening, Mohit sir. How are you? Am I audible? Can you hear me properly? I'm good, thank you. And how are you? Good evening, Divyanshi ma'am. How are you? I'm good, thank you. Good evening, Simi ma'am. How are you? Sounds good, thank you. How's your day? My day was good. I had some rest. I went outside because tomorrow it's my mom's birthday. So I went outside to buy some groceries because I'm gonna cook some special dishes for her tomorrow. And that's all. In evening, yeah, I was busy with making some classes and finding some decorating items. What about your day? Simi ma'am, I'm good. Thank you. And how are you? I already asked you. Thank you so much, Mohit sir. Thank you so much, Divyanshi ma'am. Okay, tomorrow it's your last exam, so you can enjoy your holidays after that, or will your school be held? Will you have to go to school after your exams? So, waiting for your yes, Divyanshi ma'am. I was asking you about your day, and as Mohit sir has mentioned, my day was productive. Okay. On 24th March, there is PayTM, and from 1st April, new session will start. Okay, so are you excited to, I should say that, rejoin your school? Because I think you may have missed your school classes, your friends, your teachers. Go to school. Okay, you're very excited to go to your school. Yeah, because sometimes we do miss our, the routine because you had been regular with your school. That is why. Otherwise, you could say like, no, sir, I'm not excited because what is the use of going to school? Yeah, isn't it? So there are so many people they don't want to go to schools, and I met personally some of students, especially college goers now. They don't want to go to college. They just want to stay at home, or they just want to prepare at home only. So I think
It's personal choice. So, what about there are 8 people live, so may I know who all are there now? To those who have joined, my day was as usual, sir. I went to college and studied, and I have to submit some documents, so I submitted. uh, यहाँ हैव टू नहीं यूज होगा, है ना? यहाँ पे आपको दिव्यांशु मैम यूज करना चाहिए आई हैड टू, या फिर आप यूज कर सकते हो आई वॉज टू सबमिट, है ना? मुझे सबमिट करने थे, तो आप वहां पे पास्ट की बात करेंगे तो आई वॉज टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स, सो आई सबमिटेड them and it took me 4 hours. Oh, I had प्याज की सब्जी and roti for breakfast, दाल चावल with आंवले का अचार and फूल गोभी की सब्जी with rice and roti. Good. I had pyaj ki kachori today. There's a very good person. He makes very delicious pyaj ki kachori. So whenever I go to that area, I always have that pyaj ki kachori. Good evening, Sudhir sir. I'm good, thank you. And how are you? Good evening, Priya ma'am. I'm good, thank you. And how are you? So, and how's weather in your city, guys? Because here, if you ask me, in Jaipur, it's really hot outside in the daytime. So, you know, dal chawal for lunch and pool gobi ki sabji for dinner. Okay. So, pyaj roti for breakfast, dal chawal. Understood. What about Simi ma'am? Where are you? And how about your day? You haven't told. What about Sudhir sir, Priya ma'am? What about your day? How was your day? What did you do? Again, I say that everyone please like the video because there are very less likes. There are only four likes. Now there are 5. Today I had upma for breakfast, and for lunch I had dal chawal with achar. And desi ghee for dinner. I had masala dalia. Sounds good. Today I had poha for breakfast, pyaj ki kachori for lunch, and for dinner, I think my favorite dal roti. I will have. I haven't had yet. Also liked it. That's good, but it's better. It's okay, liking, but it's time to talk about. Well, guys, it's 10 o'clock, so let's do our business, and we all are here to, of course, make sentences, learn some new words. Today, I may not be sharing new words, but today it's all about a lot of practice. And today I have chosen a particular word. It's a question word, and I want to make a lot of what times are related. मुझे आप लोगों से आज प्रैक्टिस करनी है because we haven't been making questions a lot, especially question जो words हैं उनको हम लोग use नहीं कर सकते. Where is your dream catcher? My dream catcher is just uh, behind me. So I just want to ask you to make a lot of questions on what time. So I hope you all guys remember
जब हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात की है तो उसमें से एक क्वेश्चन वर्ड व्हाट टाइम होता है। एंड इसके सारे डेफिनेशंस, सारा एक्सप्लेनेशन क्लास के अंदर ऑलरेडी हैव डन. I read a moral story and I learned some new words. That's great. But now let's get back to the business. So I have given you a word, what time. So मुझे अभी आप लोगों से बहुत सारे आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है विद डिफरेंट टाइम वर्ड्स. आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं व्हाट टाइम के साथ में एंड विद डिफरेंट टाइम वर्ड्स. ठीक है, सो आप डिफरेंट टाइम वर्ड्स यूज करिए और व्हाट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं आपको. सो जस्ट वेटिंग फॉर योर practice. You, it seems to be very slow, your actions. Good evening, Ranjana ma'am. Are you confused? What time? What this? Did you do your homework? What time? Ranjana, sorry, Divyanshi ma'am, आपको होता है. What time do you have breakfast? Good. What time? I just read it. This. What time did you do your homework? How are you, sir? Ranjana ma'am, I'm good. Thank you. And how are you? Let's participate in the today's session. What time is it right now? Good. What time did you wake up today? Okay, that's good. What time will you get up early tomorrow? Do you know that I will get up early, Simi ma'am? You don't know. So sometimes, if you know about the person will get up early, then only. Otherwise, इसमें आप early word को मत use करिए. आप सिर्फ use करिए what time will you get up tomorrow? And अच्छा, आप लोग जो क्वेश्चंस बना रहे हैं इसका जो भी आंसर है वो भी आपको खुद को देना है. योर क्वेश्चन, योर आंसर. नाउ सो द फर्स्ट वन, Divyanshi ma'am, your question is first. So what time did you do your homework? It's now, just imagine कि अब ये मेरा क्वेश्चन है. सो नाउ अब आपको इसका आंसर करना है. ठीक है सुधीर सर, व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट? इसका आपको आंसर करना है. मोहित सर, आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे? प्रिया मैम, आपको इसका आंसर करना है. सिमी मैम, व्हाट टाइम विल यू गेट अप टुमारो? इसका आंसर आपको करना है. व्हाट टाइम डू यू डू योर हाउस चोर? इसका आंसर आपको ही करना है अभी. व्हाट टाइम डू यू वेक अप? प्रिया मैम, इसका क्वेश्चन व्हाट टाइम विल यू टेक डिनर? आपको इसका आंसर करना है. आई डिड माई होमवर्क एट 12 o'clock. नाउ इट्स बिट कंफ्यूजिंग. अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता सकता हूँ. जैसे 12 o'clock दिन में 2 बार होते हैं. सो दैट इज वाई जब आप सामने आपस में बात नहीं कर रहे हैं यूजुअली, तो आपको देखिए अगर आप 12 o'clock लगा रहे हैं तो इसके बाद आपको जरूर यूज करना चाहिए 12 o'clock एट नून, फाइन, या फिर एट नाइट. आपको ये यूज करना चाहिए बिकॉज 12 o'clock आई डिड माई होमवर्क. बिकॉज होमवर्क रात के 12 बजे भी लोग कर सकते हैं और दोपहर में 12 बजे भी कर सकते हैं. सो टुडे आई वोक अप. दैट इज वाई मैं ये क्वेश्चन आपसे पता कर रहा था. बिकॉज अब आपके जो प्रपोजिशंस के यूजेस हैं उसको अब मैं चेक कर सकता हूँ. जैसे प्रिया मैम, आपका जो मिस आउट कर गया वो है आपने प्रपोजिशन यूज नहीं की. योर आंसर इज राइट, है ना. कि व्हाट टाइम का आपने आंसर दिया, टुडे आई वोक अप. क्लियर. इस पहली बात तो ये दोनों वर्ड अलग हो जाएंगे. दूसरा है कि आपको यहाँ पे प्रपोजिशन जरूर यूज करनी है. एट, अराउंड, टिल, अनटिल, जो भी प्रपोजिशन आपको सही लगती है. अगर आप सही 5 बजे उठे थे तो आपको लिखना चाहिए एट 5 o'clock ना. सो आई विल गेट अप एट 6 o'clock. It's 10. Yeah, it's 10:04 p.m. Yeah, I will do my house chore at 11 o'clock in the afternoon. That's better. Yeah, I have breakfast around 11:30. अब आप सुधीर सर को मैं यही कहूँगा कि सर 11:30 पे अब हम ब्रेकफास्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते.
है ना? ब्रेकफास्ट का टाइम नॉट 11:30, इट्स अ ब्रंच टाइम। सो फिर आपको ब्रेकफास्ट तो यूज ही नहीं करना पड़ेगा, आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा कि अगर आप 11:30 पर ही सबसे पहले खाना खा रहे हैं तो आपका मतलब है यू स्किप योर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, इसका मतलब है। So I will take dinner at 10:40 p.m. Good. So this it will be brunch. Yeah, yeah, it's fine. So let's go ahead. है ना? Yeah, brunch. 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 So what time? What time do you go to office? I go to my office around 11 a.m. That's great. ठीक है, आपने क्वेश्चन भी पूछ लिया एंड आंसर भी आपने कर दिया है। ओके, अच्छा, व्हाट टाइम को शुड के साथ आप यूज करिए। और आपको याद है कि शुड से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जो शुड का यूज है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आई होप यू रिमेंबर दैट रूल कि अगर आपको यूज करना हो व्हाट टाइम शुड आई, और सिर्फ आपको इसमें कुछ एक्शंस को ऐड करना हो कि व्हाट टाइम शुड आई। सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे शुड का यूज है। आपके मन में जो एक हल्की सी शंका है, डाउट है, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं। सो व्हाट टाइम शुड आई, व्हाट टाइम डू यू मेक हलवा, इज इट व्हाट टाइम शुड आई गेट रेडी, व्हाट टाइम डज ही रीड न्यूज़पेपर, good evening Bhanu sir, I was having my dinner. Okay, it's okay. So what time should I get ready, what time should I go to school? Okay, कुछ और पहुंचे अगर मतलब आपको कभी किसी ने इनवाइट किया हो तो उस समय आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको इनवाइट किया कि आप आइएगा मेरे घर पे, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइम शुड आई स्लीप। अच्छा, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहें, आई थिंक आई डोंट नो सुषमा मैम ने, सॉरी प्रिया मैम ने, कल का सेशन तो आपने आई थिंक यू डिडंट अटेंड, उसके बाद शायद आपने कल का वीडियो भी नहीं देखा है। अदरवाइज आप कल के दो वर्ड यूज कर सकते थे स्लीप के लिए, आप किप वर्ड भी यूज कर सकते हो और स्लम्बर वर्ड भी यूज कर सकते हो, है ना? अच्छा, किप, व्हाट टाइम शुड आई गिव मेडिसिन, या दैट्स फाइन। व्हाट टाइम शुड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे टू यूज नहीं होगा रंजना मैम, फॉर मॉर्निंग वॉक। सो व्हाट टाइम शुड आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, what time should I slumber? Yeah, now it's better. What time should I come to the party? So, what time should I work out? वर्क आउट वर्ड को आपको अलग अलग लिखना होगा सिमीमा में, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। वर्क अलग हो जाएगा, आउट अलग हो जाएगा। व्हाट टाइम शुड आई मेक डिनर बिकॉज गेस्ट विल बी कम। अब इसमें दो तरीके से होंगे। अगर आपको बी लगाना है ना दिव्यांशु मैम, तो आपको विल प्लस बी प्लस एक्शन आईएनजी का रूल है। तो फिर इस आपका सेंटेंस सही करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप लगाओगे बिकॉज गेस्ट विल बी कमिंग एट 5 o'clock इन द इवनिंग, तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर आप बी को हटा दो, गेस्ट विल कम एट 5 o'clock इन द इवनिंग। व्हाट टाइम शुड आई टेक डिनर, आई रीड न्यूज़पेपर एट 10:20। Okay, that's good. So when I go ahead with some more uh, sentences, I think you still kind of upload. I don't know that whether you are very convenient with this, but मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे. What time should I see the doctor? Yes, of course.
या आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप डॉक्टर से व्हाट टाइम शुड आई मेक डिनर, यस पूछ सकते हैं आप। व्हाट टाइम शुड आई प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है। यू आर मेकिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वेरी नाइस। तो व्हाट टाइम शुड आई, अच्छा व्हाट टाइम डज के साथ प्रैक्टिस करते हैं आप, व्हाट टाइम डज। और आपको पता है ना कि जब डज यूज करेंगे तो यहाँ पे आप किन लोगों के लिए सवाल पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। व्हाट टाइम डज, यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने किसी ने भी प्रैक्टिस कर ली व्हाट टाइम डज यू, सो देयर यू गो, आपकी यहीं पे ग्रामर की जो मिस्टेक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सो व्हाट टाइम डज यानी कि लाइफ का सेंटेंस, और व्हाट टाइम डज योर फ्रेंड कम इन द पार्टी, कम टू द पार्टी, और डज लाइफ का सेंटेंस है। तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये पूछ रहे हो कि आपके दोस्त कितने बजे पार्टी में आता है या आती है, या आए थे पास्ट में, या आपको खुद को सवाल पूछना है ना। व्हाट टाइम डज ही टेक ऑनलाइन क्लास, यस दैट्स बेटर। What time will you make tasty dishes? Because tomorrow is your mom's birthday. I will start making dishes, uh, you know, early in the morning because my Didi and Jiaji and my nephew will come, for breakfast. And after that, actually, they will go out of Bhopal. They will go, my Jiaji will go to his hometown to celebrate Holi with his parents. So that's why they will come home early in the morning. So I think I'll have to start making food early in the morning tomorrow. What time does he get up? अच्छा, यहाँ पे आप ही शी को हटा के प्लीज राइट सम नेम्स, है ना, तो क्लियर होगा ज़्यादा, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट टाइम डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। सो जो आप यूज कर रहे हैं जैसे, सो ट्राई टू मेक what time does she go for a walk, what time does she get up, so better आप किसी पर्सन का नाम ले लीजिए, विल बी क्लियर नो, बिकॉज एज मतलब मान लीजिए कि यू टॉकिंग टू मी राइट नाउ एंड आप मुझसे जुड़े हुए किसी इंसान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, देन ओनली विल बी लाइक मोर practical real life sentences बनने. What time does your mom have dinner? That's better. That's really good. So what time does your sister, your younger sister get up? जैसे मान लो मैं पूछ सकता हूँ रंजना मैम की छोटी बहनें हैं. So what time does your younger sister get up? What time does Shanu eat his dinner? That's better. What time does your father come back from office? Okay. So what time does your father come back from office? What time does your mother make lunch? What time does your boss, if you are working somewhere, I can ask this question. What time does your boss reach the office? What time does your sister go to her office? Better. Fine. So what time does, because यहाँ पे what time should I go to my friend's house? But अभी does की practice चल रही है दिव्यांशी मैम. Right now we are practicing on does. So try to make more questions on does. ठीक है. What time does it take to it? What time does it take to? What time does it take to get delivered? यहाँ पे what time यूज नहीं होगा भानु सर, यहाँ पे यूज होना चाहिए, या तो आप यूज करें हाउ लॉन्ग, या यूज करिए हाउ मच टाइम, बिकॉज यू आर आस्किंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. और जब हम किसी काम के होने का ड्यूरेशन पता करते हैं कि इस काम को होने में कितना टाइम लगना चाहिए, लगेगा, लगा था, है ना, तो हमें हाउ लॉन्ग या फिर हाउ मच टाइम से क्वेश्चन पूछना चाहिए. तो यहाँ वो टाइम नहीं होगा.
सो आप ये बता कर सकते हो कि व्हाट टाइम विल इट बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन कि कितने बजे डिलीवर होगा, तो ये क्वेश्चन वहां पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम होगा डिलीवर होने में, तो इसका सेंस अलग है, यहाँ पे ड्यूरेशन पता कर रहे हैं फिर हम लोग। सुषमा एंड प्रिया बोथ आर गेट अप, इसमें आर यूज नहीं होगा। ठीक है, रंजना मैम, सुषमा एंड प्रिया बोथ गेट अप दोनों अलग वर्ड होंगे। गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड एट 5 o'clock। सो इसमें दो तीन चीजें हैं, सो ट्राई टू यूज दोनों चीजों में। सुषमा एंड प्रिया गेट अप अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। नाउ ये एक सीक्वेंस को आप ऐसे कर सकते हो। व्हाट टाइम डज प्रांजलि गो टू कॉलेज, व्हाट टाइम डज टिल्लू गो फॉर ट्रैकिंग की स्पेलिंग जरूर चेक कर लो दिव्यांशी मैम। ओके सर, व्हाट टाइम डज सुनील सर मेक ड्रीम कैचर, there is no fixed time for that. What time does your colleague come to office? His daughter goes to school around 8:40. Okay. What time does your mom make breakfast? That's better. Yeah. So there you go. And now द सेकेंड क्वेश्चन वर्ड टुडे, आज हम लोगों की अभी तक की प्रैक्टिस हो चुकी है वर्ड टाइम से रिलेटेड, एंड नाउ देयर वी गो। और जो अब का दूसरा क्वेश्चन वर्ड है आज जिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज हाउ लॉन्ग। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप व्हाट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस मत बनाइएगा, अब आपको बनाने हाउ लॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड प्लीज जब आप हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनाएंगे तो रिमेंबर वन थिंग, इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है टाइम ड्यूरेशन को पता करने के लिए। एग्जैक्ट टाइम, किसी भी काम के टाइम घटित होने का घड़ी वाला टाइम पता करना है तो व्हाट टाइम यूज करिए। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये समय शुरू होता है इतने बजे तक चलता है, दैट इज हाउ लॉन्ग। जैसे दिस इज वेरी गुड सिमी मैम, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, इट्स गुड। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। अच्छा, आप लोग जब इसका आप इसको जब आंसर करें तो मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल सिमी मैम ने मुझसे पूछा हाउ लॉन्ग विल यू टेक क्लास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक वन ड्रीम कैचर, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। फाइन, सो आप लोग जो कर रहे हैं इसमें जब आप किससे पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी देर टीवी देखते हैं, कितनी देर आप खेलते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू यू मॉर्निंग वॉक, मैम गलत है, इसमें चेक करो डू यू के बाद एक्शन गायब है, यू नो। सो इस चीज को जरूर चेक करिए। फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सो अब फॉर लगा के बताइएगा, जैसे पहला जो एग्जांपल है कि हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, अगर आपसे कोई पूछ रहा है उसका आपको आंसर करना है कि आप 7 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स होते हैं, तो स्लीप फॉर लगा के फिर आपको यूज करना है 8 आवर्स। ठीक है, 7 आवर्स, 6 आवर्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आई स्टडी फॉर 6 आवर्स, आई स्टडी फॉर 4 आवर्स, आई स्टडी ओनली फॉर 2 आवर्स। जितने भी आप घंटे पढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट, दैट्स फाइन। हाउ लॉन्ग डू यू वॉक यूज कर सकते हो ना दिव्यांशी मैम, हाउ लॉन्ग डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये क्या हो गया। अब हाउ लॉन्ग डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक मत पता करना, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सो हाउ लॉन्ग डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप वॉक करते हो, मुझे जानना है कितनी देर आप वॉक करते हो, तो वहां बता सकते हो कि आई वॉक फॉर 30 मिनट्स, आई वॉक फॉर 1 आवर। वन लगाए ना तो आवर्स यूज नहीं कर सकते, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर माई मॉम टू गेट फुली रिकवर्ड, हाँ ये आप बिल्कुल पता कर सकते हो। अ, अब इसमें आपको फॉर यूज नहीं करना भानु सर, है ना, कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई मॉम टू गेट फुली रिकवर्ड, इसमें फॉर हटा दो, अदरवाइज जो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। हाउ लॉन्ग विल यू मेक डिशेस फॉर टुमारोज पार्टी, हाउ लॉन्ग विल यू मेक डिशेस,
How long does it take you to like the video? How long does it take you to like the video? uh, it depends. Usually, it depends on my schedule actually. That usually I'm not very much online, because I have some pieces of work. So Mohit sir, if you ask me this question, so whenever I get some time, whenever I am on YouTube, I like the videos, those I post. So how long do you walk? बिल्कुल आप पूछ सकते हो. How long did you come to Jaipur from Bhopal? No, this is not right. अब यहाँ आप समय लगने की बात कर रहे हैं सिमी मैम, तो यहाँ पे होना चाहिए हाउ लॉन्ग डिड इट टेक. जब हमें किसी काम को करने में टाइम लगता है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच जयपुर. रीच भी लग जाएगा, रीच जयपुर फ्रॉम भोपाल. How long does it take to make a complicated tattoo? How long does it take you? अब डिपेंड करता है. अब कॉम्प्लिकेटेड टैटूज में अलग अलग आर्टिस्ट हो गए, यहाँ पे यू नहीं है क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड टैटूज में depends on the size actually, and the detailings given in the, like if you ask me a portrait tattoo of 4 to 5 inches, it takes me around 2 or 3 hours to complete. And if it is bigger, like if you have seen one of my tattoos, that was phoenix bird, full arm tattoo, it took me around 17 hours to complete that tattoo. It was very big. How long it takes you to make the aloo ka paratha? The aloo ka paratha. How long do you watch television? Yeah, you can ask me how long do you watch television. It depends. If there is cricket match, I watch almost the full match. And how long does it take you to call your brother to make? So how long it takes you to make the aloo ka paratha? So aloo ke parathe banane mein filling, and then it takes. If you ask me about one aloo ka paratha, depends on the quantity. How long does it take you to make breakfast? It depends again on the dish. If it is poha or upma, you know, so it doesn't take so much time. How long does it take you to call your brother? To call your brother, मतलब आपको कितना टाइम लगता है अपने भाई को कॉल करने में? पूछ सकते हैं, बट आप a bit confused कि आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हो दिव्यांशी मैम. दैट कि आप अपने ब्रदर से कितनी देर कॉल पे बात करते हो, या आपको भाई को कॉल करने में कितना टाइम लग जाता है? हाउ लॉन्ग डू यू रीड न्यूज़पेपर? आई डोंट रीड न्यूज़पेपर nowadays, Sudhir sir. If you ask me this question, I have left reading newspaper to make breakfast. So how long do you spend? How much time use करना चाहिए फिर आपको? How much time do you spend? How long do you spend your time with mobile phone? You want to say this? It depends on the work. If I'm busy with the sketching or dream catcher making, so I don't use my mobile phones then. They are kept aside. How long does it take you to prepare white sauce pasta? Was a good question. Two people have asked me this question. How long does it take you to make white cheese pasta? I tell you, it's really not very typical kind of thing. It's very easy to make white sauce cheese pasta. So usually it takes me 30 minutes, not more than 30 to 40 minutes. 7 to 8 minutes to boil the pasta, and when the pasta is being boiled,
At that very moment, at that time, you can cut the vegetables. After that, you can like I think 5 6 minutes it takes to make the white sauce, and after that, hardly 5 6 minutes to make this. So I think it doesn't take more than 30 minutes. How long does it take you to type a letter? It depends on the letter and the content what is there. How long did you be at the food fest? वर यू लगा लो, आप यहाँ पे डिड मत यूज करो, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है बट ये लिटरेचर में चला गया, बहुत ही टिपिकल बना दिया हम लोगों ने इस सेंटेंस को। तो भानु सर, दिस इज अ राइट सेंटेंस, बट इसको आपको पूछना चाहिए हाउ लॉन्ग वर यू एट द फूड फेस्ट। I was there for I think more than 3 hours. Yeah, I reached I think quarter to five, and I left after 8 o'clock. So I spent more than 3 hours over there. I'm asking in a sarcastic way about that question कि भाई को कॉल करने में बेटा कितना टाइम लगता है। भाई को कॉल कर लो। Got it. But here, because I was not able to see your expression, so that's why I was not able. So I don't see some regular practice from right now. I think the Divyanshi ma'ams, these are how long do you sleep? That's good question, Ranjana ma'am. अच्छा, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे अब उसके अगर आप आंसर करो तो रंजना मैम, माय क्वेश्चन टू यू, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, हाउ लॉन्ग डू यू वॉक in the morning? Devanshi ma'am, how long does it take you to make cheese balls? Or how long does it take you to call your brother? And Bhanu sir, what about you? How long does it take you? And Priya ma'am, what about you? How much time do you spend with your mobile phone? How long does it takes you to write a paragraph? Again, it depends on the material, actually, the topic. How long is the Kashmir files? It took me 2 hours to make cheese paratha. It took me or it takes me? Only one paratha? It took you 2 hours to make cheese paratha? You sleep for 6 7 hours? 10 parathas. Yeah. So, and how much cheese did you use in that? It took so it's 10:30, guys. Time to say goodbye because our commitment is for 30 minutes. So yeah, here you see the time around 40 minutes because 10 minutes for the first one slice in one paratha, one slice in one paratha. Then why it took you 2 hours? I think it shouldn't have taken you 2 hours. 10 parathas means one paratha. Anyways, I sleep for 7 8 hours. Thank you so much, sir. You're most welcome, everyone. Thank you for being present in today's session. Have a good night.
Have a sound slumber. Huh. Thank you so much, Banu sir. That's so nice of you. Good night, everyone. Good night.